सिंह का कथित ऑडियो वायरल। बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए हिसार सीट को बता रहे सेफ। बोले सोनीपत सीट पर हुड्डा कर सकते हैं गड़बड़। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। हेमा मालिनी पर दिए विवादित बयान को लेकर सुरजेवाला पर सीएम सैनी का वार। बोले कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं, चुनावों में महिलाएं सिखाएंगी सबक। सीएम नायब सिंह सैनी आज रतिया में करेंगे रैली। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस अलर्ट। आज हो सकता है हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग सकती है हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। गुरुग्राम के होटल में किडनी रैकेट में बड़े खुलासे। बांग्लादेश में सौदा, जयपुर में ऑपरेशन और गुरुग्राम में विश्राम। 4 लाख में तय होती थी डील। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोर्ट में लगाई एक और पिटीशन। तिहाड़ जेल में मुलाकातियों की संख्या बढ़ाने की मांग। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की चिट्ठी, कहा बाहर आऊंगा। ऑफर, लोगों की ख्वाहिश है मैं उनकी नुमाइंदगी करूं। बीजेपी ने कहा परिवारवाद से बाहर नहीं आ सकते। और हिमाचल के चंबा, हमीरपुर, कुल्लू में महसूस किए झटके, रिएक्टर पैमाने पर। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी खबर के साथ। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वो अपने बेटे के लिए हिसार सीट को सेफ यानी सुरक्षित बता रहे हैं। वहीं सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव से उनको डर है कि यहां हुड्डा उनका काम बिगाड़ सकते हैं। ऑडियो में एक समर्थक से बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। हालांकि न्यूज 18 पंजाब हरियाणा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन माना जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह एक समर्थक से बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में वो हिसार लोकसभा सीट से अपने बेटे को सेफ बता रहे हैं। तो सोनीपत सीट का जब जिक्र आता है तो वहां उनको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर गड़बड़ कर सकते हैं। कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि वहां 5 विधायक हुड्डा के हैं। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। बृजेंद्र सिंह को हिसार या सोनीपत सीट से पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। आज अंतिम मुहर भी लग सकती है नामों पर। तो ऐसे में ये ऑडियो जो वायरल हुआ है, इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि भले ही बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हों, लेकिन अभी भी चौधरी बीरेंद्र सिंह को डर सता रहा है कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका काम ना बिगाड़ दे। जितने ज्यादा साथी जोड़ोगे उतने तगड़े रहोगे ना जी। पूरा जोर ला देंगे। बिल्कुल। बाकी हिसार को ठीक रहेगा जी। सोनीपत जी हिसार अच्छा जी। अच्छा तो सोनीपत ठीक है, लेकिन ये हुड्डा जो है ना, हाँ जी, ये हुड्डा यार, हाँ जी, इसके एमएलए 5 तो, और ये रोल कर के मतलब। अच्छा जी। अच्छा हाँ, इसलिए हिसार में कुछ है नहीं। हिसार में अपना सौदा सारा। हाँ जी, हाँ हाँ। हिसार में जी ज्यादा तो कमा जी, हिसार तो बढ़िया रंगे जी। हाँ हाँ, देखते हैं। चलो देखो पार्टी क्या कहती है। लिया तो जी नीचे अपनी तरली तो पक्की होगी जी। बात तो तरली कौन सी? या विधानसभा वाली जी। विधानसभा वाली जी अपने विधानसभा तो चिंता ना कर, ये थोड़ी कई करा गए। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। की दुदानी फोन लाइन से जुड़ गए अंकित। ये कथित ऑडियो जो वायरल हो रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह का बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या और रिएक्शन मिल पाए हैं, जानकारी मिल पाई है, साबित हो पाया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह है? बिल्कुल, आवाज से जो लग रहा है अभी वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ही लग रहे हैं, क्योंकि आवाज बिल्कुल बीरेंद्र सिंह की ही है और जिस तरह से बात करने का उनका अंदाज है वो अंदाज भी बीरेंद्र सिंह का ही अंदाज है। और उन्होंने साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
सोनीपत से अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो हुड्डा वहां ठीक नहीं करेगा, 5 जो एमएलए हैं वो हुड्डा के हैं वहां। तो कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी हावी रहती है, और हुड्डा, वैसे तो हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें और वीरेंद्र सिंह की बात करें तो ये दोनों आपस में एक ही परिवार के लोग हैं, बुआ मामा के दोनों परिवार हैं और दोनों आपस में भाई लगते हैं। लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर सब संभव है, राजनीति के अंदर एक दूसरे से ऊपर जाने की होड़ लगी रहती है। और इसी तरह से इसीलिए वो हिसार सीट को जो है वो सेफ मान रहे हैं, क्योंकि हिसार सीट के अंदर जींद जो है, उचाना जो है वो भी आता है, तो कहीं ना कहीं हिसार सीट को वो सेफ मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हिसार से अगर उम्मीदवार बनाया जाता है ब्रजेंद्र सिंह को तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो 2005 की अगर बात करें, पीछे जाएं तो वहां उस समय वित्त मंत्री बने थे हरियाणा सरकार के अंदर वीरेंद्र सिंह, और उस समय भी जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो आपस में जो गुटबाजी थी वो देखने को साफ मिलती थी। और 2009 का जब चुनाव आया तो उस समय वीरेंद्र सिंह नहीं। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कथित ऑडियो जिसके बाद हरियाणा की सियासत में उबाल है, और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। 2024 के चुनावी दंगल के लिए गारंटी लेकर आई है कांग्रेस। सीधी तस्वीरें आपको, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया जाएगा क्या उनके घोषणा पत्र में इस बार जनता के लिए है। 5 जो वादे और 25 गारंटियां इस बार कांग्रेस लेकर आई है। घोषणा पत्र जारी हो रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। Honorable Congress President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto, and what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024.
We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare.
So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें।